दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होता हुआ, पहली गेंद जाने दिया उसे। 1 रन पहली गेंद पे बाय के रूप में आता हुआ। दूसरा मुकाबला आज दूसरे दिन का, यहाँ पर प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी का 12 ओवर प्रति इनिंग इसमें भी डाले जाएंगे। सी के प्ले स्टेशन ग्रेटर नोएडा में खेला जा रहा है ये मुकाबला। टीम बी ने टॉस जीतकर फैसला किया पहले बल्लेबाजी करने का। अच्छा शॉट, गैप में खेल दिया, पुअर फील्डिंग। देखना होगा गेंद क्या पहुंच पाती है सीमा रेखा तक। जी हाँ, शानदार चौका। पहला चौका पहले रन बल्ले से आते हुए। काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से ओपन करने आए हैं रोबिन राजपूत और सचिन मिश्रा। गेंदबाजी कर रहे हैं हर्षित अत्री। बेहतर गेंद कवर्स की तरफ खेला। केवल एक ही रन मिल पाएगा। दूसरा मुकाबला आज के दिन का। अच्छी गेंद कवर्स की तरफ धकेला। कोई रन नहीं। अच्छी गेंद कवर्स की तरफ धकेला और रन लेना चाहते थे। देखना होगा रन आउट है नहीं। जी हाँ, वापस जाना होगा पवेलियन की ओर। तालमेल में खासी गड़बड़ी देखने को मिली। पहले ही ओवर में विकेट गिरता हुआ हमने देखा। नए बल्लेबाज चर्चित जो कि हैं एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्ट्राइक संभालेंगे। ये है ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे हर्षित अत्री का। अच्छी गेंद और खेला भी अच्छा है।
मिड ऑन के फील्डर के पास एक रन के लिए ऑफ द मार्क यहाँ पर होते हुए चर्चित। आखिरी गेंद पे आया एक रन। एक ओवर समाप्त होता है। 8 रन, एक विकेट के नुकसान पे स्कोर। काफी ज्यादा बड़ी वाइड और नहीं कलेक्ट कर पाए विकेट कीपर भी। निश्चित रूप से 4 रन मिल जाएंगे। वाइड प्लस 4, 5 रन ले लीजिए। गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ कुमार। इस बार धकेला है गेंद को मिड विकेट की तरफ। एक रन लिया, दूसरा लेना जरूर चाहते थे वहां पर चर्चित, लेकिन मना किया रोबिन ने। स्ट्राइक रखना चाहेंगे अपने पास, रिस्की हो सकता था दूसरा रन लेना। अच्छी गेंद थी लेकिन शॉट उससे भी अच्छा। फील्डिंग की तारीफ करनी होगी, रन लेने का मौका नहीं। डॉट बॉल। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बिना कुछ संपर्क बनाए गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अगली गेंद और पैरों पे डाली, फ्लिक किया है बल्लेबाज ने। एक रन लिया, दूसरा रन भी तेजी के साथ लेकर यहाँ पर पूरा करते हुए। फुलटॉस गेंद मिड ऑफ पे भेजा। थोड़ा सा वहां पे फंबल, एक रन लिया, दूसरा रन मना किया वहां पर रोबिन ने। जाना पड़ा चर्चित को वापस। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। पुल करना चाहते थे, संपर्क नहीं बनाया गेंद के साथ, वाइड दी क्योंकि पैरों को छोड़ के निकल गई गेंद। एक रन जुड़ेगा, गेंद अभी डाली जानी बाकी। ओ बढ़िया कवर ड्राइव। एक रन तेजी के साथ दौड़ के पूरा करते, वो डायरेक्ट हिट अगर लगती तो 100% आउट थे। फ्रेम में भी नहीं थे, क्रीज से काफी दूर थे चर्चित। एक रन के साथ ओवर पूरा होता है। 2 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन, एक विकेट के नुकसान पे। वाइड के साथ शुरुआत होती हुई
एक रन। ओ बहुत ही अच्छी गेंद। देव ठाकुर यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में राइट आर्म राउंड द विकेट डाल रहे हैं, एक एंगल से निकाल रहे हैं राइट हैंडर से बाहर गेंदों को। ओ अच्छी गेंद प्लेस किया उसे कवर्स की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से मिल जाएगा। अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन नॉट आउट द अंपायर। मिड विकेट की तरफ खेला, एक रन तेजी के साथ दौड़ के पूरा करते हुए। राउंड द विकेट, फिर से एक बार मिड ऑफ की तरफ खेला, फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने के लिए काफी समय मिला बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, हल्के हाथों से खेला गया, सॉफ्ट बॉटम हैंड्स, और डॉट बॉल रही, कोई रन नहीं आया। 3 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे। लेफ्ट आर्म चाइनामैन, बहुत ही अच्छा शॉट खेला गया है गैप में, डीप में, हालांकि फील्डर कोशिश नहीं रोक पाएंगे, गेंद निकल के 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट। अगली गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद, पड़ के थोड़ी अंदर आई, थोड़ी नीचे भी रही, बल्लेबाज तकलीफ में, डॉट बॉल। आगे बढ़ के खेला है, और यहाँ पर पाव कॉर्नर के फील्डर तेजी के साथ आकर गेंद को पकड़ते हुए 2 रन इसी बीच आसानी के साथ पूरे करते हुए।
स्क्वायर लेग पे धकेला, 1 रन के लिए। चौथा ये ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं नमन वाहिद, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कल के मुकाबलों में भी हमने उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा, काफी अच्छा कंट्रोल है। बीइंग द लेफ्ट आर्म चाइनामैन इज नॉट दैट इजी। जिस तरह की गेंदबाजी ये करते हैं। पहला ओवर उनके स्पेल का यहाँ पे चलता हुआ, और स्ट्राइक पे है चर्चित, और थोड़ी सी ज्यादा ही बाहर इस बार ऑफ स्टंप से। वाइड का इशारा यहाँ पे दिया अंपायर ने। 32 स्कोर हो चुका है, ये रन वाइड का जुड़ेगा एक्स्ट्राज में। नमन वाही अगली गेंद के साथ, थोड़ी शॉर्ट लेंथ गेंद, थोड़ा ज्यादा हट के यहाँ पर रूम बना के खेलना चाहते थे। बल्ले पे आई नहीं ढंग से गेंद, टाइमिंग थोड़ा बेहतर हो सकता था। आखिरी गेंद चौथे ओवर की डालेंगे नमन। ये ओवर थोड़ा सा महंगा उनका जाता हुआ। रन रेट की अगर हम बात करें टीम बी के, तो 8.61 का विकेट एक गिरा है। डिसेंट रन रेट इसे कहा जा सकता है। ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा बुरा भी नहीं। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी, एक अच्छा शॉट खेला है, देखना करो, पता नहीं जी नहीं, मिस फील्ड वहां पर हुई और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। तो बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त होता है। 4 ओवर के बाद स्कोर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम बी। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें तो 111 का प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पर दिखता हुआ। 9.25 का करंट रन रेट। तो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, टीम बी ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और वो फैसला अभी तक फिलहाल ठीक ठाक दिखता हुआ। 1 विकेट जरूर गंवाया है टीम बी ने, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन उनके कंट्रोल में दिखती हुई काफी हद तक। 5वें ओवर की शुरुआत, थोड़ी स्लो रन के साथ बल्ला पहले ले आए, हवा में थोड़ी देर के लिए रही गेंद, लेकिन गेंदबाज से दूर। 5वां ओवर चल रहा है पारी का, और स्ट्राइक पे हैं चर्चित, गेंदबाजी कर रहे हैं देव ठाकुर। हल्के हाथों से धकेला स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। 38 पे 1 स्कोर, 4.2 ओवर के बाद। 12 ओवर प्रति इनिंग यहाँ पर डाले जाएंगे, और ये देखिए बहुत अच्छी गेंद राउंड द विकेट डाल रहे हैं, और राइट हैंड बैट्समैन के एंगल से गेंदों को बाहर निकाल रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। क्योंकि इस एंगल से जब आप गेंदे डालते हैं तो गुड लेंथ से जो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें निकलती हैं, आसान नहीं होता है खेल पाना। अच्छा खासा बल्लेबाज भी कई बार चकमा खा जाता है। गेंद और इस बार डेफिनेटली वाइड, काफी ज्यादा बाहर। लेग स्टंप से गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। गेंद दोबारा डालनी होगी, रन जुड़ेगा एक्स्ट्रा में। रोबिन राजपूत स्ट्राइक पे है, 21 रन बनाकर खेले, स्टेप आउट करके यहाँ पे खेला है बिल्कुल सीधे बल्ले से, कुछ अंश हाथ का लगा जरूर था गेंदबाज का, जिसके चलते गेंद की जो गति थी उसमें थोड़ा धीमापन आया। 1 रन केवल लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को। देव ठाकुर अभी तक ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट हालांकि नहीं मिला है उन्हें अभी तक। लगातार तलाश जारी उनकी, और मुझे लगता है शायद तीसरा ओवर वो डालेंगे अपने स्पेल का, क्योंकि 2 गेंदबाज डाल सकते हैं 3 ओवर, और 3 गेंदबाजों की लिमिट है 2 ओवर की। तो मुझे ऐसा लगता है शायद देव ठाकुर उन 2 गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं जो 3 ओवर का स्पेल अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, स्ट्राइक पे रोबिन राजपूत। अच्छा शॉट, ग्राउंडेड खेला है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, 1 रन और यहाँ पे जुड़ता हुआ।
इसे एक रन के साथ ओवर पूरा होता है। 5 ओवर के बाद स्कोर 42, एक विकेट के नुकसान पे। 42 पे 5 ओवर के बाद रन रेट की अगर बात करें 8.40, प्रोजेक्टेड स्कोर दिखता हुआ 101 का। 101। पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो लगभग 111 का लक्ष्य था, जिसको चेस करते हुए 80 रन ही बना पाई थी ओपोनेंट टीम दूसरी पारी में। तो यानी कि 100 रन बनाने आसान नहीं। डिसेंट गेंदबाजी, डिसेंट फील्डिंग भी अगर यहाँ पर देखने को मिले तो 100 रन के आसपास 12 ओवर में चेस कर पाना मुश्किल। इसी बीच हवा में दे मारा है और फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन आते हुए काउ कॉर्नर पे। और इसी बीच एक बार फिर से उठा के दे मारा है, इस बार लगभग वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। लगातार हवा में खेलने की कोशिश और फंस गए यहाँ पर। रोबिन राजपूत अच्छी पारी खेल रहे थे, 27 रन बना पाए 19 गेंदों में। अच्छी पारी खेली, लेकिन इस तरह का जोखिम उठाना थोड़ा सा भारी पड़ गया। कोई जरूरत नहीं थी, अभी काफी ओवर बचे हुए थे, इसके बाद भी लगभग 7 ओवर बचे हुए। छठा ओवर यहाँ पे चलता हुआ। रोमिल राजपूत की तारीफ करनी होगी, अच्छे हाथ उन्होंने दिखाए बल्लेबाजी में। दूसरा विकेट गंवाया है टीम बी ने रोबिन के रूप में। और नए बल्लेबाज आए हैं दीपांशु, राइट हैंड बैट्समैन। फिलहाल स्ट्राइक संभालेंगे, सामना करेंगे दर्श श्रीवास्तव का। दर्श की भी अगर हम बात करें तो कल उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, और बल्लेबाजी से भी उन्होंने थोड़ा प्रभावित किया था। राइट आर्म लेग स्पिनर, बहुत अच्छी गेंद, प्रॉपर लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए पड़ के गेंद बाहर निकली। और कल हमने देखा था एक दो अच्छी गुगली भी उन्होंने डाली थी, तो यानी कि अच्छा रिस्क पे कंट्रोल है उनका। और बल्लेबाजों को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी उन्हें रीड करते हुए। और यहाँ पे बोल्ड मिडल स्टंप, यहाँ पर बाहर आते हुए ऑन साइड को टारगेट कर रहे थे, सारी अपनी स्टंप्स एक्सपोज कर दी, और गेंद चली गई सीधा स्टंप्स के अंदर। मिस हिट, यू मिस आई हिट वाला काम हुआ यहाँ पर। दर्श श्रीवास्तव को मिल गया उनका दूसरा विकेट भी, एक ही ओवर के अंदर दूसरा विकेट। और ओवर अभी खत्म नहीं हुआ है, दो गेंदें अभी भी डाली जानी बाकी। बेहतरीन ओवर अभी तक गुजरता हुआ। तीसरा विकेट गिरा है 46 के स्कोर पे। 5.4 ओवर, दो गेंदें बाकी। देखना होगा नए बल्लेबाज कौन होते हैं यहाँ पे। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही ज्यादा स्पिन वहां पर देखने को मिला। कट के काफी ज्यादा बाहर निकले बल्लेबाज, पूरी तरह से बीट हुए। फॉरवर्ड डिफेंस करने के लिए पल्ला उन्होंने निकाला था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा वहां पर स्पिन देखने को मिला। मेरे ख्याल में कम से कम भी एक 20 से 25 डिग्री के आसपास का स्पिन एंगल वहां पे देखने को मिला।
ये अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए बल्लेबाज। और इसी के साथ यहाँ पे ओवर खत्म होता है। 6 ओवर के बाद स्कोर 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 6 ही ओवर और डाले जाने बाकी। प्रोजेक्टेड स्कोर 92 का। 7.67 का रन रेट में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है पिछले 2 ओवर में खासकर। और इस ओवर की अगर हम बात करें, 2 विकेट यहाँ पर गंवा दिए हैं टीम बी ने। 4 रन और 2 विकेट इस ओवर से आए। बेहतरीन ओवर दर्श श्रीवास्तव का। बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। इस बार मिस हिट जरूर है, हवा में गेंद थी लेकिन भाग्यशाली रहे। टार हिट की कोशिश लगती तो बहुत बड़े मार्जिन से आउट हो जाते चर्चित। पार्थ is currently on strike, facing the next delivery of Naman Wahi. Left arm Charman and again. Look at that ball. The way the ball came inside. A very good spin, and another wicket goes down. This is the fourth wicket. This time 47 for 4 is the score after 6.3 overs. Naman Wahi getting the very first wicket for himself and the fourth wicket for his team. Naman Wahi took the wicket of Parth. Parth could not score any run after facing 3 balls. This is the seventh over going on. 3 more deliveries to go, and I must say, Team B is looking in trouble. They are having a hard time. We saw 3 wickets going down in a very less amount of time. Robin scored 27 of 19 balls, who is so far the highest run scorer. He, he played with the help of 4 boundaries. Naman Wahi, not that economical right now, but of course he took his very first wicket. Let's see how he bowls in the remaining overs, and we will have to see whether he completes a 2 over spell or a 3 over spell. And the new batsman is Rishabh Rajput, will be taking the strike and will face Naman Wahi. Rishabh Rajput, right-hand batsman. He has an experience of 26 matches on the basis of the stats available in Cricket Heroes and an average of around 19. Rishabh Rajput we saw in the previous couple of matches. He has the strength, he has the ability to hit it big. Let's see how many more runs and what kind of way he uses in order to score those runs. To give some respect to the bowler on the very first delivery, a good forward defense by the batsman. So Rishabh, the right-hand batsman, facing Naman Wahi, the left-hand Chinaman. A good shot. He has played it towards the long on area. And there's a fielder there to stop the ball. Only 1 run taken. Both the batsmen will have to be satisfied with the single only. Now only 1 ball left. Churchit is now on strike. Will face Naman Wahi. I guess it's now a very good competition. Both left-hand players. Churchit, the left-hand batsman, and Naman Wahi, the left-arm Chinaman bowler. And look at the way, exactly what I was anticipating. The way the ball spun and went away from the batsman. It was a treat to watch, and the batsman got beaten on that ball comprehensively. Dot ball.
And after 7 overs, the score is 48 for 4. We saw only 2 runs coming along with 1 wicket. 7 overs, 48 for 4. Naman Wahi was exceptional in the previous over. He also took the very first wicket for himself. So far, he has conceded 15 runs in a spell of 2 overs with an economy rate of 7.50. On strike, back is Rishabh, who has faced only 2 deliveries so far. Churchit looking better. He has spent some good amount of time, decent amount of time as far as 12 over inning is concerned. 13 balls he has faced. He could score only 8 runs so far. Now it's the beginning of the 8th over. This time Rishabh wanted to play it big. A lofted shot, but no connection whatsoever. Dot ball. First ball was a dot ball. Rishabh got beaten completely. That's Srivastava bowling second over of his spell. He was brilliant in the first over. This time the ball is in the air by Rishabh, but he was lucky enough that the ball landed in the safe zone. 1 run taken, and the strike goes back to Churchit. Rishabh looking a little slow this time. I guess he has taken the responsibility on his shoulders because he can see that 4 wickets are already down and they are already in the 8th over. They have to keep their wickets intact so that they can score more and more runs. Darsh Srivastava with the next ball. Right arm leg spin bowling round the wicket. This time Churchit, he has played it towards the mid wicket area. There is a fielder there. Single taken. And 50 is also up. 50 after losing 4 wickets. Projected score is showing as 80. Current run rate needs to be improved a little because 80 might not be very challenging as far as 12 over match is concerned. This time, again, Rishabh got beaten, but enough time for him to take a single, which is a Y, will be added to the extras. Right, I'm like, so and this is time. He got clean bowled, Churchit. We all see he was struggling on the few previous balls, and this time the Srivastav literally nailed it in his bowling and took the wicket off Churchit, who could score only 9 runs after facing 15 balls, finally departs and will have to go back to the pavilion. Darshi was the bowling brilliantly so far. This is third wicket of his bowling. Second over of his spell has conceded only 6 runs and has already taken 3 wickets. Economy rate is below 4. Now one more delivery to go in this 8th over. Let's see who's the new batsman who will be taking the strike and will face the Srivastava. Last delivery, a flighted delivery, very well played towards the mid wicket area. Good fielding by there as well. Single taken easily. With this single, we are done with the 8th over also. Score is 52 for the loss of 5 wickets. Now we are left with 4 overs. Let's see how many more runs they can score in 4 overs. Team B currently struggling for sure, have already lost 5 wickets. All the main batsmen have already gone back to the pavilion.
Last delivery. Uh, Here's an appeal by the bowler. Single taken easily. There was an attempt for a direct hit, but the ball could not connect with the stumps. Second delivery of this over. This time a lofted shot. The ball is in the air and a very good catch. Look at the way he took that catch. A very good diving catch in the deep. Sixth wicket finally goes down on a score of 53. We are in the ninth over. This is the third over. Naman Wahi taking second wicket of his spell. Oh, this time he has placed it towards covers. Fielder is there, but enough time to take a single. A very good delivery. A flighted ball by Naman Wahi. Very well played as well towards the mid wicket area. Naman Wahi is bowling brilliantly so far, not just in this match, but in this tournament. This is the third and last over of his spell. He's already taken two wickets so far after conceding 16 runs, which is, of course, not too much considering this limited over format, 12 over format. Again, a very good fielding attempt by the fielder. We must appreciate fielding because all the fielders have been really good. They have supported their bowlers really well. And if a bowler gets support of all the fielders, then of course, the confidence also of the bowler and the entire team goes high, which in return attacks the confidence of the batting team. This time, the batsman played it towards the mid off area. No scope of taking any single with this dot ball. Ninth over gone, 57 for 6 is the score. Run rate needs to be improved if they really want to get to a fighting total or at least a respectable total. Akshit and Abdullah are there facing and batting against the opponent's team B. Let's see who bowls in this 10th over, a very important over as well. In the previous over, we saw 5 runs and 1 wicket coming. A river, and I guess he got successful in the attempt, and yes, 4 more runs will be added. He plays the ball towards the backward point area. Two fielders were there in order to stop the ball, but could not get successful. The very first ball, and we saw a 4 coming. This is the 10th over. 61 for 6 is the score. Boundary on the very first over. This over is being bowled by Darsh Srivastava, and as I had expected, Darsh and Naman both are completing their 3 over spell. Full toss ball played towards the mid wicket area. Single will be converted into a double for sure. They have enough time. Yes.
And the weather is also looking good. This time we can see some wind, some air blowing, and which might help a little to the bowlers. At the same time, the fielders because they can have a little relaxed movements earlier. And the sun was out pretty much. And look at that extraordinary kind of sort of weird kind of shot played. And this time the ball is going towards the final area. Fielders could not stop it. Four more runs coming in the form of bye, so they will be added to the extras. 66 for 6 is the score. Three more deliveries to go in this 10th over. 10 runs so far in this over. In the first three balls, three more deliveries to go. Next delivery, the ball is in the air, but a little far from the fielder. One run coming. Two more deliveries to go in this 10th over. So far, this over is also a little expensive, especially Darsh Srivastava, who didn't spend too many runs, didn't concede too many runs in the previous overs, but this time in this over, he is looking a little more expensive. One more run added, and now the last delivery of this 10th over. Akshat versus Darsh Srivastava. Darsh has already taken three wickets. Can he take one more wicket on the last ball of his spell? Oh, very good ball. It was a close call, and the batsman wanted to take a single, but simply denied by the runner, the non-second end batsman. Again, there was some lack of coordination between both the batsmen, but everything under control. After 10 overs, the score is 68 for 6. Now, only two more overs to go in this first inning. Achhi gained and a very good single taken by both the batsmen, especially the batsman who was running towards the danger end. This is the 11th over. Saurabh Kumar bowling second over of his spell. He was a little expensive in the previous over of his spell, conceded 11 runs, has not been able to take any wicket so far. This time a slower one. The batsman wanted to hit a lofted shot but could not connect his bat with the ball. Dot ball. This partnership needs to be there till the very last ball if you really want to make some more runs because the run rate is not that impressive. 6.68 runs per over in a 12 over format is not that impressive. This time he has played again. A lofted shot. The ball is in the air and a fielder underneath. And a very good catch in the deep. Seventh wicket goes down on a score of 69. And finally, first wicket for Saurabh Kumar. Akshat has to depart. He'll be going back to the pavilion. Three more deliveries to go in this 11th over.
A very good shot. He has played it towards the point area. Single taken. 1 run. Last ball of 11th over. And this time he has played it absolutely straight. 1 run taken easily. After 11 overs, score is 75 for 7. Now this is the last over of this first inning. He has played it towards the mid wicket again. The ball was in the air for a while, but situation under control. Single taken on the first ball. This time he has played it towards the backward point area. It will be a difficult chase for the fielder, and it's a 4. It was not a convincing shot by the batsman, but still you will get 4 runs because runs matter more than the shot selection. And this time the ball is in the air, could not go far enough, and a very good catch. It could have been a good attempt, but finally he dropped the catch. 3 more deliveries to go in this 12th over. 81 for 7 is the score. Can they reach 90 in the next 3 balls? Oh, it was on a half volley delivery, an attempt for the lofted shot, but no run taken. Again, the ball is in the air. Can it be an easy task for the fielder? Oh, he dropped the catch. Another catch dropped. It was not a difficult catch. Now only 1 more delivery to go. Last delivery of this 12th over, 12th and the final over of this first inning. On strike is Rajneesh and Harshit Atri with the very last ball.
Shuttle and ball. The A very good attempt for the second run. The non-striker and batsman was all set for taking the run, and he was already out of his crease. So finally, two runs came on the last ball after 12 overs. 84 for 7 is the score. 85 will be the target, and we'll be seeing how the team A chases 85 runs. I guess it won't be a very difficult chase, but if we see a